Okay, hey everybody, do watch this recording. In this video, I have explained the effect of multiple dielectrics inside the capacitor. And I have solved one numerical related to series and parallel combination of capacitors when there is dielectric inside the capacitor. Okay, so let me begin with the basics here. So we know that when the capacitor is fully charged, I have not shown the battery here. This is charged capacitor. The distance between the plates is d. And what is the formula? What is the formula for the capacitance? Isn't it C is equal to, C stands for capacitance, permittivity of the free space, A for area, and D distance between the plates. Now we also know this basic formula. It means if you increase the voltage of the battery, the parallel plate capacitor will store more charge. It will store more electrical energy. Then comes proportionality constant. We call it capacitance. C stands for capacitance. And this is the formula for the parallel plate capacitor. So there are different types of capacitor. Here we are talking about parallel plate capacitor. Now let me introduce dielectric inside. Okay. Now what will happen if you introduce dielectric between the plates? So what is dielectric actually? Dielectric means insulator. So when you place a dielectric slab inside, all the negative charges will accumulate at this surface, which is towards the positive plate due to the attraction, and all the ions will shift this side. And this process is known as polarization. As you can see, the electric field inside will be in opposite direction. So electric field lines, they start from a positive charge and they terminate into negative. This is the direction of electric field. And within the dielectric, as you can see, the electric field is in opposite direction due to the polarization effect. And due to that, the electric field inside will get reduced k times. Even potential difference will also reduce k times. Even energy. These three quantities will reduce. Here I have not connected this capacitor to the battery. If I connect this capacitor to the battery, in that case these equations will change. Okay. Here capacitor is not connected to the battery. There are two different cases that I have explained in the previous videos. In case if you have not seen, kindly do watch it. Chalo, theek hai, let's move on. What about capacitance now? What about this capacitance? Well, capacitance will increase. How? We will use this formula to understand. चलो देखते हैं. Charge है ना, वो change नहीं होगा basically. Charges will remain the same. It means these two things will change now. They are inversely proportional. Charge is constant. C and V are inversely proportional. Like I said, potential difference is decreasing k times. It means capacitance will increase k times. Isn't it? तो मेरा जो फाइनल कैपेसिटेंस है C2 ले लेता है उसको, ठीक है ना. ये इसको C1 ले लेते जो ओरिजिनल था, या फिर मैं O लिख देता, O फॉर ओरिजिनल, और ये फाइनल. चलो ठीक है. तो मेरा जो न्यू कैपेसिटेंस है, इट विल बी k टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस. Using this formula we can understand it. Well, here I have not connected the battery. If the battery is still connected, all the equations will change. So like I said, there are two different cases. ठीक है ना. The bottom line here is capacitance will increase k times if I introduce a dielectric between the parallel plates. ठीक है ना. So why it is going blur? Oh dear. What's wrong with the resolution here? Okay, चलो ठीक है.
Now let me fill multiple dielectrics between the parallel plates. So suppose that I am filling कैपेसिटर प्लेट्स विथ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स. तो दो ले लेते हैं, ठीक है ना. मैं दो डाइलेक्ट्रिक से इसको फिल करता हूँ. सपोज दैट बोथ द डाइलेक्ट्रिक्स आर हैविंग सेम थिकनेस. दिस इज डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 and this is K2, dielectric of dielectric constant K2. Now suppose that they both are having same thickness, so they will divided this parallel plate into two halves. ये divide 2 हो जाएगा, ये divide 2 हो जाएगा. इसका जो thickness है ये equal to divide 2 हो जाएगा, राइट? क्योंकि दोनों अगर equal thickness है तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना. ये जो ओरिजिनल डिस्टेंस है it will get divided into half half part. So I can say that my thickness is equal to d by 2 for both of them, T1, T2. This is simple case, huh? This is simple case. It could be different, okay? It could be different. It could be like thickness of one plate is 3 by 2d and the thickness of another plate is 1 by 2d. Okay, it could be different. Let me take the simple one. Now I need to calculate the total capacitance here. Okay, so there are two ways to solve this part. एक तो ये फॉर्मूला है, d माइनस टी प्लस टी बाई के. ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है. t स्टैंड्स फॉर थिकनेस. ओके, यहाँ पे अच्छा दूसरा फॉर्मूला जो है वो सीरीज वाला है. आई मीन C1 C2 C1 प्लस C2. दो C क्यों आ रही? क्योंकि एक तो ये बनेगा, एक C ये बनेगा और एक ये C बनेगा C2. क्यों? बिकॉज दिस डाइलेक्ट्रिक इज डिवाइडिंग द सेम कैपेसिटर इनटू टू पार्ट्स because there are two dielectrics, right? So why this is series, why not parallel? Well, let me solve this part first and then I will explain this wala part. ठीक है ना? तो let me solve this part first. I mean let me calculate the total capacitance when there are two dielectrics of equal thickness. So let's begin here. Let me write the formula here. Sorry, it should be C capacitance. फार्मूला क्या था? d माइनस टी. दो टी है तो दो टी आएगा, दो बार आएगा, ठीक है ना. थिकनेस 1 थिकनेस 2 विच इज इक्वल टू d बाई 2 फॉर बोथ ऑफ देम. दिस इज सिंपलेस्ट केस. T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2. So this formula I have explained in the previous videos. Kindly do watch those videos. चलो ठीक है. अब देखो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ तो मैंने सिंपल केस लिया है, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये वाला पार्ट d है, ये d ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ओके, शॉर्टकट. आई वांट टू सेव माय टाइम बेसिकली. तो ये क्या रह जाएगा? यहाँ पे क्या बच जाएगा? T1 by K1 plus T2 by K2 will remain. Okay, so now let me solve it further. T1 कितना? d by 2 है. T2 कितना? वो भी d by 2 है. Okay, so let me put the values here. Let me solve it here. This is the simple case. Let me remind you once again. है ना, T1 का थिकनेस कितना है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस. इसका भी वही है. अच्छा, d by 2 कॉमन है, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ. d by 2 कॉमन है ना दोनों में, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है ना. सो व्हाट विल रिमेन इनसाइड देन? K1 प्लस K2. Isn't it? Am I going very fast? No. Now check this one. That's it. The 2 will go on the top. I mean into the numerator. Only d will remain into the denominator and 1 by k. चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते. So what will be there? K2 plus K1 into K2. That's it. अभी ये ऊपर जाएगा. So okay,
Alright, so this is my final equation, and as you can see here, this is original capacitance, so I can write it like in this way as well. To original capacitance, let me call it final capacitance. Okay, final. Oh, sorry, my bad. It should be K1 into K2, K1 plus K2. All right, everybody, this is my final capacitance. Now, like I said, I'll solve it using capacitor connected in series as well. Okay, so let me explain it here only before I solve it. Series में कैसे आ गए ये दोनों, देखो. Actually, these two dielectrics are dividing this capacitor into two parts. Let me show it here. एक तो ये हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है ना. So it's like two capacitors are connected in series. So basically, which formula do I have to use here? ये वाला C1 C2. So it's like this one is C1 and this is C2. So I will get the same formula here as well. Okay, so I'll solve it. उससे पहले एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूँ, ठीक है ना. शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो. अब देखो यहाँ पे इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है. सीरीज दोनों के लिए एप्सिलॉन कॉमन है, ए भी कॉमन है. ओके, एरिया ऑफ द प्लेट इज सेम, ओनली डी इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डी बाई टू. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी बाई टू. ये टू सीधा ऊपर जाएगा, एंड इन साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई, राइट. सो मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, के एन के टू का. बिलो इनटू द डिनोमिनेटर वी हैव टू ऐड देम. सो एडिशन किसका होगा, K1 K2, और जो एरिया एप्सिलॉन नॉट डी बाई टू वो तो बाहर आ गया ना, वो तो कॉमन हो गया. 2 विल गो इनटू द न्यूमरेटर, ये 2 सीधा ऊपर जाएगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना. सीधा ऊपर जाएगा वो इनटू द न्यूमरेटर. सो एज यू कैन सी दीज टू इक्वेशन आर सिमिलर. तो यहाँ पे तो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया. ओके, इसको मैं एक और बार दिखा देता हूँ. चलो ठीक है, लेट मी शो यू वंस अगेन. शॉर्टकट है थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि हमें शॉर्टकट ही यूज़ करना है. ऑल्दो आई विल सॉल्व इट यूजिंग स्टेप बाय स्टेप. oops, my bad. ओके, चेक दिस वन. सॉरी, फाइनल कैपेसिटेंस एप्सिलॉन कॉमन है, ए भी कॉमन है दोनों के लिए. चेंज क्या हो रहा है, डी बाई टू है ना, डिवाइड हो रहा है. मैंने कॉमन लिया दोनों के लिए. ऊपर क्या होता है सीरीज में, मल्टीप्लाई होता है. नीचे क्या होता है, एडिशन होता है. ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है ना. तो बेसिकली दीज टू इक्वेशंस आर, फाइनल फार्मूला इज सेम. सो ईदर यू सॉल्व इट यूजिंग दैट प्रीवियस फार्मूला, दिस वाला. लेट मी शो यू वंस अगेन, ये वाला फार्मूला, और using capacitor connected in series, you will get the same equation. well ये थोड़ा शॉर्टकट था, ठीक है ना. in the next video which is regarding series and parallel combination of capacitors, I'll solve it step by step and I will get the same equation, same final formula. Okay, so kindly do like my videos. Okay, thank you very much.